Objective was to fix the revenue for the Britishers. Now before that, the revenue was not fixed. It was fluctuating depending upon the production, depending upon the prices there in the market. To stabilize that, they came out with this particular concept of permanent settlement, to actually have a stabilized income also to the company or to the Britishers. Now what was done? 10 by 11th. Now see, 10 by 11th was fixed as a rental for the company. What company did? Just try to understand it here itself. Now what company did? First of all, British company made Jamindar as the collector of revenue on the behalf of the company, and Jamindar had to collect it from the peasants. And what was the collection that has to go to the company? That was 10 by 11th of the rental. What is rental? Rental means this is a piece of land where the farmer was doing the farming. Alright, so the piece of land, the farmer was doing the farming. This piece of land, according to this practice, Jamindar became the owner of piece of land. Fine, Jamindar became theoretically the owner of piece of land. Practically he was not, but theoretically owner of piece of land. So piece of land was owned by Jamindar. Fine, on the piece of land the peasants were doing the farming. What was done? 10 by 11th of rental was fixed on the piece of land. Suppose a piece of land can give a revenue of rupees 1 lakh. Alright, rupees 1 lakh, maybe let's say another example, just to have a very clear cut idea about it. Let's say 1.3 lakh. That is the maximum revenue that can come from this piece of land. Alright, suppose estimated by the Britishers 1.3 lakh or 1 lakh also, you can say any example you can say. Now out of that, suppose 1 lakh is the maximum amount of revenue for this piece of land. So out of that, 10 by 11th will have to be collected by this Jamindar and will have to be deposited to this company. Fine. And till the time this Jamindar is paying this company this much of money, he will continue to remain as Jamindar. Not he, but his successors will also continue to remain a Jamindar. The day when he will fail, company will ask the Jamindar to leave the plot, and this particular plot will be given to another X or Y Jamindar. Fine. Now in this system, the benefit was completely with the Britishers. Why? First and foremost, the agents of exploitation was not directly the company, Jamindars, for them. So Jamindars became the direct agents of exploiters of the peasants, but the company was behind the veil. पर्दे के पीछे कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही थी. कंपनी को फिक्स रेवेन्यू हो गया. मान लीजिए 1 लाख इससे आता है, तो 1 लाख का 10 by 11th कितना होगा? 99,000 जो भी कर लीजिए. सो 99,000 रुपया कंपनी को फिक्स हो गया इस लैंड से. अब कंपनी को मतलब सिर्फ 99,000 रुपया से, अगर इसका 1 लाख ही मानते हैं, जस्ट कीप इट 1 लाख ओनली, सो 99,000 रुपया कंपनी के पास फिक्स हो गया इस लैंड से. तो इस लैंड का नाम मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए चित्तागोंग लैंड है, चित्तागोंग का एरिया है, वहां का लैंड है. तो 99,000 चित्तागोंग से आना शुरू हो गया कंपनी को फिक्स. अब इमेजिन कीजिए कि इस लैंड से, इस जमींदार या पेजेंट्स के कारण इन्होंने 1 लाख का रेवेन्यू पहले होता था, अब इन्होंने बढ़ा दिया 1.5 लाख कर दिया. ठीक है. किसी कारणवश हो सकता है जमींदार ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ नया फर्टिलाइजर, कुछ नया केमिकल जो भी है लगा के उसकी जो उपज है बढ़ा दी. ठीक है. लैंड को रिक्लेम किया, उपज बढ़ गया, 1.5 लाख का रेवेन्यू आने लगा. यहां से कंपनी को अभी भी मतलब इतने ही से है. क्या है वो? 99,000 रुपया. बाकी जो पैसा बचा वो जमींदार और पेजेंट्स के खाते में. ठीक है.
सो जमींदार और पेजेंट्स के खाते में ये पैसा बचा. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. सो इन दिस परमानेंट सेटलमेंट देयर वाज आल्सो अ स्कोप ऑफ improvement in the agricultural production. This question can be asked you in prelims. They can give you a statement which among the following statement is incorrect or rather are correct for permanent settlement. So you have to remember, in this system there was a scope also of the improvement of land and thereby increasing the total agricultural production, and the surplus production or surplus revenue would be appropriated between zamindars and the peasants. Company was concerned only with this particular amount of money. Now the point is that who used to determine कि 1 लाख रुपया होगा इसका, इस पीस ऑफ लैंड का 1 लाख रुपया होगा रेवेन्यू मैक्सिमम जो कि कंपनी लेगी या कंपनी निर्धारित कर रही है, उसका 10/11 कंपनी लेगी रेंट के रूप में. ये डिसाइड कौन करता था? ये डिसाइड कंपनी ही करती थी, कंपनी के सर्वेयर ही करते थे. सो व्हाट यूज्ड टू डू, कंपनी यूज्ड टू कीप इट एज द हाईएस्ट मार्जिन, हाउएवर जॉन शोड लेटर ऑन क्लैरिफाइड कि ऐसा नहीं था, 45% ही रखते थे मैक्सिमम हम लोग टोटल क्रॉप के प्रोडक्शन का. लेकिन समझना यहां यह है कि ये हाईएस्ट रखते थे अपने सर्वे के अनुसार कि इस लैंड से मैक्सिमम कितना आ सकता है. मान लें कि आ सकता है 1.25 लाख रुपया, तो 1 लाख रख दो इसका रेवेन्यू, ताकि 25,000 में ये जमींदार और पेजेंट सर्वाइव कर जाए और 1 लाख ये पहुंचा दे किसको? ब्रिटिश सरकार को. सी दिस वाज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हियर इन इंडिया अंडर परमानेंट सेटलमेंट. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इट very clearly, but if you read NCERT very clearly, bit by bit, is very specifically mentioned that how this particular concept was operational in India. Fine. So this was how this concept was operational in India at that point of time. Fine. So in this concept, what we have to understand that zamindars they became tenant of the company. So zamindars became the tenant of the company under the permanent settlement. जो मैंने जस्ट बताया कि जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतना रेंटल पहुंचा दे, अगर नहीं पहुंचा पाया तो अगले साल या जिस साल नहीं पहुंचाया उस साल इसको वहां से हटा दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, दूसरे को जमींदार को वहां दे दिया जाएगा वो लैंड. ठीक है, तो जमींदार चाहे जो हो जाए इसको एक्सप्लॉइट करे जैसे करे, इतना रेवेन्यू उसको पहुंचाना था. ठीक है, लगान देखा होगा मूवी आपने, तो आपको याद आ जाए थोड़ा सा कि कैसे वहां पे जो जमींदार था, जो राजा था बेचारा, वो घबराया हुआ था कि बारिश नहीं हुई है और लगान देना है ना. आपको याद होगा आमिर खान वाली मूवी, तो कैसे वो जाते हैं बात करने की लगान माफ कर दो, तो क्रिकेट खेलने को कहता है. ठीक है, खैर तो उसी संदर्भ में समझना है कि दिस वाज एक्चुअली सिस्टम देयर. फाइन. नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट द आइडिया इज व्हाई जमींदार्स वाज चोजन in this concept. Look, there are 3 very important benefits to choose zamindar in the permanent settlement to actually become the agents of revenue collector. All right. So why? Understand. First and the foremost factor was that Britishers were very clever people in terms of statecraft. Very clever. How very clever? Because they wanted to create लोकल पॉलिटिकल एलाइज. जमींदार से ज्यादा पावरफुल उस समय कोई और थे भी नहीं, तो उनको लग गया था साफ साफ कि इंडिया में रूल करना है तो कम से कम कोई एक ऐसा एंटिटी हो जो हमारे साथ हमेशा रहे. और जमींदार पावरफुल लोग थे, मनी मसल पावर दोनों उनके पास था, तो जमींदार को अपने साथ मिलाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया. ठीक है, सी दैट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई जमींदार वाज चोजन. सेकंड, financial security. The Britishers were concerned with this concept of financial security, and in this concept there was a stability of income, है ना. So because of stability of income, the zamindars were chosen in this concept. चाहे जो हो जाए, जमींदार रिच पर्सन है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है उस जमीन को, तो वो भले अपने ही खाते से पैसा निकाल के
कंपनी को दे देगा, तो कंपनी को लॉस नहीं होगा रेवेन्यू में किसी भी साल, फिक्स हो गया तो हर साल उतना पैसा तो आना ही आना है वहां से. ऑलराइट, सो दैट वाज द कांसेप्ट, दैट इज द रीजन व्हाई जमींदार्स वर चोजन. एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, there was an expectation to also increase the agricultural production, and this expectation was basically in the context of a scope being offered to the zamindars to also increase the production by reclaiming, redeveloping the land into a fertile, more post fertile land at that point of time. So if the fertile land could be increased further and income can increase further, so also zamindars were chosen. And here what one has to be understood, one has to understand it clearly, that the extra income for the zamindar was not charged as a tax, and that's the reason why there was a scope of also improvement from the land in the permanent settlement. Fine. Now this is how the permanent settlement was actually conceptualized by the Britishers. All right, and then